से प्रश्न है कि क्या सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को बढ़ाकर दूर दराज क्षेत्रों में इसकी पहुंच और जागरूकता बढ़ाने की कोई योजना बना रही है? Honorable Minister. Sir, health insurance is a priority for this government. In fact, we are hoping that by the year, as a matter of industry and its policy, by 2033, it is expected that we'll have insurance cover for all. In fact, in December 2025, we brought in a bill whereby we had increased the FDI coverage to 100%, but primarily aiming to bring greater penetration and deepen the insurance market. One specific data which I have given in the answer, but I think it's worth recalling, sir. Particularly because the Honourable Member is speaking about rural areas, I would like to highlight the fact that the IRDAI, the insurance regulator, has notified Insurance Regulatory Development Authority rules for the rural social sector and motor third-party obligations in 2024, whereby Gram Panchayat level inclusion happens for insurance. So remotest areas will be covered by that. In this, the way in which it's going to be organized is the unit of measurement for coverage and for rural obligation will be the Gram Panchayat. So keeping the Gram Panchayat as a unit, they will have to understand the level of coverage which prevails and how much more will have to be provided. In that connection, I would like to inform through you, sir, that 25,000 Gram Panchayats will be covered this time with a Gram Panchayat being at the focal center and looking at coverage of insurance in and around that area. That way we are trying to reach the fastest and the rural areas. Second supplementary, Shriman Govindbhai Lalji Dholakia ji. माननीय महोदय श्री, देश में अभी भी निजी स्वास्थ्य सेवाओं तक सामान्य जन की पहुंच कम है। मेरा माननीय मंत्री महोदया से प्रश्न है कि क्या सरकार सस्ता स्वास्थ्य बीमा हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए निजी बीमा कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कोई कदम उठा रहा है? Honorable Minister. So health insurance is growing in this country, sir. Whilst it is true that overall, if you were looking at insurance in general, we have a challenge in that we have per capita premium. If you're looking at individuals who are getting covered by insurance in total, not just health insurance, insurance in total, you have only $97 per capita as insurance premium inclusive of health, whereas global average is 943. If that is the case with overall insurance related coverage in terms of per capita, on health insurance, sir, we have been taking a lot of specific steps so that people are able to get coverage. So you know, through the GST, which was much discussed in this house, health insurance was given a priority. People wondered why we had to levy a GST on health insurance premium. So we are opening up on health by one thing, that the health insurance premiums will no longer have the GST if it's individual. So health insurance, sir, but with all this said, is rapidly expanding as a market. And actually today we have 1,17,505 crores just in 24-25, and 58 crore lives have been covered with insurance.
whilst this is the general coverage in terms of numbers, public sector insurers, particularly through health premiums, cover nearly give cover of worth 42,420 crores. Private sector does it 37,752 crores. And standalone health insurance companies are doing 37,331. But for the poorest of the poor, on health insurance coverage, the honorable member will be familiar with the fact that we Pradhan Mantri Jeevan Bima Suraksha Yojana, then also insurance cover for any accident, so that if a person loses his eye or a limb, he gets a coverage. These health-related insurances have subsidy given by the government, in the sense because they end up paying a very nominal premium for health coverages. And during COVID, I can expand by saying, even without even waiting for a death certificate, the health insurance companies were driven to give health, the insured amount without any delay. So I just want to highlight that the premium rates are also very keeping people in mind. The Jeevan Jyoti Bima Yojana, sir, takes 436 rupees per year, and it is like every year. Suppose you paid 436 rupees premium, and in this year you have a problem, being a poor person, you get 2 lakh rupees within that year, 1 year premium paid, but within that year, if some unfortunate incident happens and the person loses life, the next of kin gets 2 lakh. So the government has made sure the premium is not higher than that, and this can be renewed every year. Jeevan Jyoti Bima, therefore, I want to cumulative enrollments. Government is also driving to make sure poor people get covered. 26.79 crore people have been given Jeevan Jyoti Bima coverage. Third supplementary, Srimati Priyanka Chaudhary ji. Thank you so much, Honorable Chair. Sir, my question through you would be, over 70% of health expenditure in India is borne out of pocket by patients, and 3.2% of Indians fall below the poverty line annually due to excessive medical costs, with 31% and 47% of hospitalizations in urban and rural areas respectively, financed through loans or asset sales. Does the government acknowledge that the absence of universal health insurance coverage is pushing crores into debt and poverty, sir? Honourable Minister. So it is only because we want to extend insurance coverage to the poorest of the poor. Cashless system was brought in. This Jeevan Jyoti Bima Yojana, about which I have just elaborated a minute ago. Poor people should be covered under insurance scheme, and that is why government has been, through the banks and through every other agency, approaching every individual to have a coverage, and where government gives its own part or component of the insurance premium and extending coverage. I've given the number of how many people are getting covered, and I'm also explaining as to how we are going to the rural, poorest of the poor belt stretches and extending coverage. So government is keen to give coverage for all under insurance. Shriman Mayank Kumar Nayak ji. सोमनाथ सर, थैंक यू चेयरमैन सर। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश की जनता को आरोग्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत कार्ड की कवच देकर सभी को आरोग्य की सुविधा उपलब्ध हो, वैसा कार्य कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी से पूछना चाहता हूं कि निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम बढ़ाने जाने के सरकार ने कोई मापदंड निर्धारित किए हैं क्या? यदि हाँ, तो उनका विवरण क्या है तथा निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों की इस मनमाने को रोकने के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए? थैंक यू चेयरमैन सर। Honourable Minister. Sir, private sector insurance companies or public sector companies are all very systematically and methodically regulated by the insurance regulator.
And if there are any wrongdoings by insurance companies, the regulator acts upon them. And I just want to highlight, to give an example or give some select examples to prove that action is taken promptly the moment any complaint is received. I can also explain as to how complaints can be registered. But before that, just to make sure that in the last 3 years, we can give examples of how insurance companies, when they have done something which is wrong as per the law, have been taken to task and punishments, or imposed, fines have been imposed. Sir, I just want to highlight the fact that if there is undue influenced by insurance companies, using their dominant position, or when they make false and misleading claims, misrepresent facts, or if they omit facts or features while selling insurance, or by not taking reasonable care to ensure suitability of the policy, all these are acts of omission and commission on which companies are taken to task. I would like to highlight the fact, sir. In 23-24, 2 crore fine was levied, a penalty. I use the word fine in a bit loose fashion. 2 crore rupees was levied as penalty on an insurance company, Reliance General Insurance Company, for having not done fair practice, unfair business practice. So the honorable member can take such examples. I'll give you 2 more. In 24-25, Bajaj Finance Limited was levied a penalty of 2 crore. HDFC Life Insurance levied a fine of 2 crore. SBI Life Insurance levied a fine of 1 crore, and so on. So action is taken immediately when Royal Sundaram General Insurance, 1 crore, and so on. So if insurance cover is extended without obtaining the consent of the insured, they are levied a fine. Erroneous allocation of premium by insurer, or delay in settlement of maturity claims and survival benefits, non-payment of interest, all such offences are taken upon, inquired into, and then penalties are levied. So wrongdoing does not go unpunished, sir. And of course, there are ways in which people can reach the insurance regulator or the CP Grams, which is the central government's grievance redressal portal. If complaints reach us, we take action. 5th supplementary, Shriman Digvijay Singh ji. माननीय सभापति महोदय, आयुष्मान योजना के अंतर्गत हम स्वीकार करते हैं कि काफी लाभ लोगों को हुआ है, लेकिन 5 लाख की राशि अत्यधिक कम है। राजस्थान सरकार ने उसे बढ़ाकर 25 लाख किया था, क्योंकि जहां किडनी ट्रांसप्लांट हो, लिवर ट्रांसप्लांट हो, ऐसे बीमारियों में 5 लाख से पूर्ति नहीं हो पाती है। मैं माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं, क्या राजस्थान सरकार के फैसले के बाद क्या केंद्र सरकार इस आयुष्मान की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करेंगे? Honorable Minister. Sir, it's always a very good idea to give more and more coverage so that people are confident that their every medical requirement will be taken care of. Since the honorable member quoted Rajasthan, I'm in a bit of a quandary whether I should really say the state of affairs of such announcements. Sir, states, and whether it is Government of India or the insurance company also, or anybody, should assess the position that they are in financially, fiscally. Can they support announcements which they have made? Can many states, with due respects, whoever is finding this a bit entertaining, kindly listen to me. It is important, sir, that you announce and you're able to back it up with the kind of amount which you need. We have been running Jeevan Jyoti Bima
Suraksha Bima and also the Ayushman Bharat Yojana. It requires dedicated amounts to be given and timely redressal of insurance claims. It's easy for us to quote one state. And again, I'm refraining myself from stating how effectively the state is able to fund that program. So it's easy for us to talk, sir. I'm proud at the way in which Ayushman Bharat scheme is reaching all Indians with a 5 lakh coverage, inclusive of family members, and cashless it is, and so on. So it is easy for us to top up and say, oh, look, this is what is happening in some state, will you do it? As I said, I'll refrain from saying how that state will have to struggle to fund that program. Now question number 257, Srimati Rajni Ashok Rao Patil ji. Question number 257, sir. Honorable Minister. माननीय जवाब पटेल परक जी. First supplementary, Srimati Rajni Ashok Rao Patil ji. Sir, through you I would like to ask the Minister that concerns have been raised by medical bodies such as Indian Medical Association that several therapies under the Ministry of Ayush system lack rigorous empirical validation through large scale of randomized control trials. While safety issues have also been flagged regarding the presence of heavy metals such as lead and mercury in certain Ayurveda formulations, which have even triggered health advisors in some countries. In this context, may the Minister clarify whether the government has undertaken any comprehensive scientific evaluation of Ayush therapies, what regulatory and quality control mechanisms are being strengthened to ensure safety, efficiency and global credibility of traditional medicines. Thank you, sir. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों तथा होम्योपैथी के चिकित्सकों को विनियमित करने वाले प्रावधान NCISM एक्ट 2020 तथा NCH एक्ट 2020 के अंतर्गत स्थापित है। संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत केवल वे ही व्यक्ति चिकित्सा अभ्यास करने के लिए पात्र है कि जिनके पास मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता हो तथा जो राष्ट्र या राज्य के रजिस्टर में पंजीकृत हो। अन्य किसी चिकित्सा पद्धति के बिना आवश्यक योग्यता के प्रैक्टिस उन सभी लोगों को भी मना की गई है। क्रॉसपैथी और मैक्सोपैथी की भी उनको अनुमति नहीं दी गई है और इसका अगर कोई उल्लंघन भी करता है तो ऐसे उल्लंघन के स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है, जिसमें पंजीकरण का निलंबन या निस्तारीकरण भी शामिल है। वैसा अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। अंततः जमीनी स्तर पर चिकित्सा अभ्यास का विनियम जैसे कार्यक्षेत्र का प्रवर्तन, लाइसेंसिंग तथा क्लिनिकल संस्थाओं के मानक मुख्यतः संबंधित राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यही बताऊंगा कि इस दवाओं का जो प्रतिकूल प्रभाव और उसकी निगरानी के लिए आया के तहत 3 स्तरीय फार्माकोलॉजिस्ट प्रणाली की स्थापना भी की गई है। लॉ के बारे में अगर बताएं तो औषधीय व प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियम 1945 के तहत नियामक ढांचा है, जिस राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण के माध्यम से उसे लागू किया जाता है। जिन औषधियों में भारी धातुएं होती है उनका वैज्ञानिक विधियों द्वारा गहन शुद्धिकरण किया जाता है ताकि अंतिम उत्पाद चिकित्सीय उपयोग के लिए सुरक्षित हो सके। दवाओं की जांच जो है वह राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला और औषधि नियमों के तहत मान्यता प्राप्त निजी औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के माध्यम से की जाती है। PCIM&H जो कि आयुष मंत्रालय में एक स्वायत्त संस्थान है, जिसके माध्यम से फार्माकोपिया और फार्मूलरी का मानकीकरण भी किया जाता है
और जो WHO के मानकों के अनुरूप होता है। आयुष प्रणालियों के 5 केंद्रीय अनुसंधान परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा अनुसंधान का कार्य निरंतर रूप से किया जा रहा है और इसकी प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। इसके अलावा CCRS द्वारा प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल टॉक्सिसिटी और फार्माको महामारी विज्ञान अध्ययन के माध्यम से भी वैज्ञानिक सत्यापन सभापति महोदय किया जाता है। इसका मतलब आयुष मंत्रालय पूरी तरह से पारंपरिक औषधियों की सुरक्षा, प्रभावशीलता तथा वैश्विक विश्वसनीयता सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल जी। Sir, thank you. Sir, policy decisions permitting certain Ayush practitioners, particularly those trained in Ayurveda, to perform specific surgical procedures and in some cases prescribe modern medicines have triggered legal disputes and professional opposition from bodies such as Indian Medical Association, raising concerns about myopathy and patient safety. For instance, amendments to postgraduate Ayurveda education regulations allowed specialists in Shalya and Shalakya streams to be trained to perform around 39 general surgeries and 19 ENT or ophthalmic procedures, which have been challenged before the court and debated widely within the medical community, sir. In this context, may the Minister clarify whether the government has undertaken a comprehensive review of the regulatory framework governing the scope of practice for Ayush practitioners and what steps are being taken to establish clear legal and professional boundaries between different medical systems which ensure patient safety and maintaining the integrity of both traditional and modern healthcare system. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, आयुष मंत्रालय के पास आयुष चिकित्सकों के कार्य क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए एक पूर्ण और प्रभावशाली कार्य प्रणाली है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों तथा होम्योपैथी चिकित्सकों के विनिमय करने का प्रावधान NCI-ACM एक्ट 2020 तथा NCH एक्ट 2020 के अंतर्गत उसे स्थापित किया गया है। जैसा कि राज्य चिकित्सा परिषदें, बोर्ड एवं अन्य सक्षम प्राधिकरण अपने अपने क्षेत्राधिकार में कार्यान्वित निगरानी एवं उल्लंघनों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राज्य की ये जवाबदारी आती है। केंद्र सरकार नीतिगत ढांचे एवं वैज्ञानिक आयोगों के माध्यम से शिक्षा, पंजीकरण एवं आचार के समान मानक निर्धारित करती है, जबकि राज्य इनका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हैं। सरकार इस प्रावधानों की समय समय पर समीक्षा भी करता है एवं सुदृढ़ीकरण भी करता है ताकि उभरती चुनौतियों का समाधान करते हुए रोगी सुरक्षा एवं उच्चतम स्वास्थ्य मानकों को सुनिश्चित किया जा सके। ऐसे किसी चिकित्सा पद्धति के बिना भी अगर वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनको मना किया जाता है। थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर जॉन ब्रिटा जी। Thank you, sir. Sir, I want your support also in this, sir. So I'm glad that Honorable Finance Minister and Honorable Health Minister are also here. Sir, 26-27 budget, while presenting, she announced setting up of 3 All India Institute of Ayurveda. Madam, without specifying the states where it would be located. Sir, as you will appreciate and support, Kerala has got rich practitioner base, manuscript base, and also it's a globally renowned Ayurveda brand. Reciprocating and honoring this, will the minister set up one of these national institutes in Kerala, or will you discriminate Kerala as it was done by Naddaji in the case of All India Institute of Medical Science? No, that is not the question. You have to ask only the question. Okay, sir. That is not correct. Okay. Honorable Minister, please. माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से इस बार के हमारे 26-27 के बजट में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जिनकी आयुष में बहुत ही चिंता रहती है,
और आयुष से उनका बहुत सारा लगाव भी है और वो यही चाहते हैं कि हमारी सभी आयुष प्रणालियों का प्रचार सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं तो पूरे देश में होना चाहिए। और उनका प्रयास भी है कि जैसा कि अभी बताता हूँ मैं आ रहा हूँ कि जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री के प्रयासों से आज योग हमारे दुनिया में लगभग 180 देशों से ज़्यादा देशों में मनाया जाता है। आयुर्वेदा डे जो है तो 150 कंट्री में मनाया जाता है। यहाँ पर जो 3 आया की घोषणा की, मैं आदरणीय हमारे वित्त मंत्री को भी धन्यवाद दूंगा आयुष मंत्री के नाते। और इसके लिए जो हमने अभी देखा है कि बहुत सारे राज्यों के हमारे सांसद है, उनके भी रिकमेंडेशन आ रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में आया जैसा यूनिट होना चाहिए। बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने भी मुझे पत्र लिखे हैं, प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिख रहे हैं। और केरल में जो आयुर्वेदा का काम है, निश्चित रूप से केरल में आयुर्वेदा का काम अच्छा है और वहाँ पर बहुत से दूर से और बाहर के भी लोग वहाँ पर आयुर्वेदिक उपचार करने के लिए हमारे आयुष वीजा के माध्यम से वहाँ पर आते हैं। और उन्होंने जो मांग की है तो ऐसी तुम्हारी मांग गलत है ऐसा मैं नहीं बताऊंगा, पर निश्चित रूप से अभी 3 ही नहीं तो हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसे आने वाले 5 साल में 10 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ये बजट में 3 आए हैं, पर आगे चलकर और भी 7 करने का भी हमारे प्रधानमंत्री ने उसमें भाषण में जिक्र किया था। तो निश्चित रूप से समय के अनुसार सभी लोग बैठकर हम उस पर तय करेंगे और राज्य को जहां जहां पर इसकी आवश्यकता है, योग्यता है, वहां पर देने की कोशिश करेंगे। नाउ फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान प्रमोद तिवारी जी। सर धन्यवाद। सर ये जुड़ा हुआ सवाल इसी से, एक कहने को तो बहुत सुंदर दिखता है पर जमीनी हकीकत फर्क है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, और यहाँ बहुत से जनप्रतिनिधि बैठे हैं, अक्सर जब आयुष कार्ड लेके जाओ तो वो कैश डिपॉजिट कराते हैं। पेशेंट जब पहुंचता है तो उससे कहते हैं प्राइवेट नर्सिंग होम कैश डिपॉजिट कर दो। सही बात। ये जमीनी हकीकत है सर, मैं कोई अतिशयोक्त या गलत नहीं बोल रहा हूँ। मेरा सिर्फ इतना कहना है, जब उनसे पूछो कि इनके पास कार्ड है ये क्यों कैश जमा करें, तो वो कहते हैं कि जो हम देते हैं सरकार को उसके पेमेंट में सालों लग जाते हैं, उन्हें नहीं मिलता है उसका। तो मैं सिर्फ सीधा सवाल, लंबा भाषण नहीं सर, सीधा सवाल कि आयुष कार्ड जो स्वीकार न करें, आयुष कार्ड जो स्वीकार न करें उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जो पेमेंट सिस्टम है इसे शीघ्र से शीघ्र पेमेंट उन नर्सिंग होम को हो जिनको आप रिकॉग्नाइज करें। मेरा सीधा सवाल है और सीधे नड्डा साहब से सर। ऑनरेबल मिनिस्टर। Sir, this question does not relate to Ayush, Department of Ayush. It relates to Ministry of Health and Family Welfare. You are ready to respond? But I'll just respond. Please. हमारे यहाँ इसके स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और नेशनल लेवल पे ग्रीवेंसेस कमेटी है। कोई भी पेशेंट आयुष्मान भारत का किसी भी तरीके के उसको ग्रीवेंस हो वो दे, उसका जवाब और उसका रिड्रेसल 15 दिन के अंदर होता है, इसकी व्यवस्था की गई है। Now, fifth supplementary, Dr. Fauziya Khan ji. Sir, thank you very much. Sir, CAG audit on Uttar Pradesh Ayush Infrastructure Report 10 of 2025 says severe regional disparities are there, where some districts have as few as 5 Ayurvedic facilities against 64 in neighboring districts of similar population. How does the ministry plan to address such intra-state imbalances and ensure equitable deployment of 24,266 Ayush doctors supported under NHM? And besides this, it is seen that almost 90% of Ayush practitioners, they practice allopathic medicine, sir. So what does the government do about this? Because, sir, as Nadda ji is there, I would also like to take the opportunity of asking that there is so much violence against doctors, rising violence, and there's a demand that we bring in a national bill on it, violence against doctors, because the states have their own laws, but there is no result, no outcome. So will you come up, sir, with a national law on it and a national health tribunal on violence against doctors? Thank you, sir. Honorable Minister.
सभापति महोदय, ये जो स्वास्थ्य की जो विषय है ये राज्य के सूची में आता है और ये हमारे सम्माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा वो सही है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्य सरकारों ने वहाँ पर हमारे आयुष के डॉक्टरों को कुछ लिमिटेड इसमें एलोपैथी की भी प्रैक्टिस करने की अनुमति दी है। आदरणीय मैडम भी महाराष्ट्र से आती है, मैं भी महाराष्ट्र से आता हूँ। हमारे महाराष्ट्र सरकार ने पहले से ही आयुर्वेदा के डॉक्टर को भी एलोपैथी की कुछ प्रैक्टिस करने की अनुमति दी है और अभी अभी आपने भी देखा होगा कि होम्योपैथी के भी डॉक्टर को अनुमति दी है। और आप भी मैडम रूरल एरिया से आती है, ये बात सही है कि राज्यों को भी ऐसे निर्णय क्यों लेना पड़ते हैं। तो जो हमारी रूरल की पीएचसी है, हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहाँ पर कोई एमबीबीएस डॉक्टर जाने के लिए तैयार नहीं। आज भी हम पीएचसी में जाते हैं तो बहुत सारे पीएचसी में मेडिकल ऑफिसर के रूप में हमारे आयुष के डॉक्टर ही काम कर रहे हैं और आयुष के डॉक्टर ही रूरल एरिया को अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। उनकी जो प्राथमिकताएं होती है वो पूरी करने का काम, सेवा करने का काम आयुष के डॉक्टर कर रहे हैं, लेकिन वो विषय राज्य का है, वो केंद्र का नहीं है। आपने जो उत्तर प्रदेश के बारे में बताया, मैं अतिशय सम्मान के साथ में कहूँगा कि ये जो हमारा आयुष विभाग है, हमारी जो पारंपरिक उपचार पद्धतियाँ हैं, ये कई सालों से दुर्लक्षित थी। पहले सरकारों ने इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। ये आयुष एक विभाग करके स्वास्थ्य विभाग के अंदर चलाया जाता था। पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा पूरी जनता की ओर से कि उन्होंने पंतप्रधान बनने के बाद में पहला काम किया कि आयुष मंत्रालय की स्थापना यहाँ पर की और तब से आयुष मंत्रालय ने पूरे देश में नहीं तो दुनिया में हमारी जो ट्रेडिशनल उपचार पद्धति है उसका प्रचार और प्रसार करने का काम इस मंत्रालय के माध्यम से जारी है। अभी यूपी की जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आप माध्यम से सदस्य को बताना चाहूँगा कि 2014-15 से लेकर 2024-25 तक लगभग 5,670 करोड़ से ज़्यादा निधि राज्यों को दी गई है। उसमें से लगभग 203 एकीकृत आयुष अस्पताल खोले गए हैं, 518 आयुष अस्पतालों का अपग्रेडेशन किया गया है, 6,234 आयुष औषधालयों का अपग्रेडेशन किया गया है, 2,387 पीएससी उसमें काम चलता है, 746 सीएससी में भी इंटीग्रेटेड उपचार आयुष के माध्यम से किए जाते हैं और आयुष सुविधाओं का इंटीग्रेशन और दवाई का सपोर्ट भी हमारे मंत्रालय से किया जाता है। प्रतिवर्ष लगभग 1,157 आयुष अस्पतालों और 12,677 आयुष डिस्पेंसरी को भी दवाई की पूर्ति की जाती है। तो ये सभी राज्यों में की जाती है। अगर यूपी के बारे में अगर माननीय सदस्य जानना चाहती तो अलग से मुझे लिखो। उत्तर प्रदेश के बारे में भी अगर कुछ ऐसा होगा तो वहां पर भी हम सुधार लाने का प्रयास करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 258 श्रीमान अशोक राव शंकर राव चौहान जी। ऑनरेबल मिनिस्टर, Just read on the table. फर्स्ट सप्लीमेंट्री, थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान महेंद्र भट्ट जी। महोदय, मैं माननीय मंत्री जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए गए ऋणों में एनपीए की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या सरकार के पास डिफॉल्ट के प्रमुख कारणों का कोई विश्लेषण है? क्या छोटे उद्यमों को पुनर्भुगतान में राहत देने के लिए कोई नई नीति प्रस्तावित है? ऑनरेबल मिनिस्टर। Sir, I would like to state that this PM Mudra is one of the very popular schemes, and it has given benefits to a lot of small-time entrepreneurs. And first of all, the coverage is something which needs to be understood. 57.26 crores has been given as loan, and 39.48 lakh crores have been sanctioned since the launch of the scheme. So this is one of the biggest, if anything, bank lending schemes which has reached people who have no collaterals to provide. So in terms of the number of NPAs about which the honorable member is asking, when I say NPAs, we are talking about
outstanding, which is pending from the person to return to the bank. As we are all aware that PM Mudra has 3 schemes underneath it. One is Sishu, the second is Kishore, and third is Tarun. Total outstanding as a percentage, sir, as of 31st March 2025 is 12.4% against the total lent amount is outstanding. In Sishu, in Kishore, 9.48% of all the amounts lent is outstanding for Kishore. Third, Tarun, 7.92% is outstanding of the total amount given. So we are still not talking about NPAs in that sense. We are talking about amounts outstanding and the banks are pursuing to get it back. Fourth supplementary, Shriman Shakti Singh Gohil ji. चेयरमैन सर, इस योजना में तरुण प्लस के लिए फ्रॉम 10 लाख टू 20 लाख का प्रावधान है और यही एक सही है, क्योंकि अगर किसी को कुछ भी करना है तो एक अमाउंट आज के ज़माने में, इस महंगाई के ज़माने में अमाउंट ठीक होनी चाहिए, वो तरुण प्लस के लिए। मैं आपके ज़रिए मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तरुण प्लस इस कैटेगरी में उन्हें मुद्रा योजना से लाभ मिलता है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से, जिन्होंने सक्सेसफुली पास्ट में लोन लेके पेमेंट किया है। अब इस कैटेगरी में मंत्री जी का जो रिप्लाई है उसमें सर देखिए आप 0.30 नंबर ऑफ लोन्स इन लैक्स, 0.30 एंड अमाउंट सैंक्शन रुपीज इन लाख करोड़ 0.04। माने तरुण प्लस में इतना कम लोन डिस्ट्रीब्यूशन करने का वजह क्या है और इसको ठीक करने के लिए सरकार क्या कदम उठाना चाहती है? Honorable Minister. Sir, for the honorable member of parliament is right in saying you take a loan, then you come back, you repay it, and if you've done it well, you're going to get more, and Tarun Plus certainly gets more. But in order to have more people go through a successful experiment of that or successful business enterprise of that, several steps are taken, sir. We try to campaign among those who have had the loans being given, but that is only to make it popular among people. But isko aur sudhar karne ke liye कहने के समय, I just want to draw the attention of the honorable member that this Tarun Plus itself is started only in October 2024. So I would like to give it a good 1 year, which is just October 25, it would have completed. We'll certainly learn from the lessons, and in order to improve it, we can always take it further, sir. But as I said, it is only a year old. The Tarun Plus is only a year old. Now, fifth supplementary, Dr. Sikandar Kumar ji. Thank you, sir, for giving me the opportunity. Sir, I would like to know from the Honorable Minister, what steps the government taking to address the higher default rates often observed in the Shishu loans up to ₹50,000 category compared to others. How many borrowers who have initially took a Shishu loan have successfully graduated to the Kishore or Tarun categories in the last 3 years? Thank you. Honorable Minister. I had tried answering this question a bit earlier, but I want to reiterate the fact that Sishu category-wise, if I have to look at specific NPA is rather low in Sishu. It is only 1.83% of the amount totally dispersed under that category. Sishu loans are given to those people who are first time coming and taking small amounts to build their businesses and so on. So as it is, I would say the total overall NPA in Mudra itself is only about 22% or in that range, 2.3 like that. So it is not as if there are huge NPAs and it is widespread and therefore we have to take huge action and so on. Most of them live within the vicinity of the banks and therefore they are in almost daily contact with the bank, and we are improving.
Now question number 259, Dr. Bhim Singh ji. संख्या 259. Honorable Minister. Sir, response is laid on the table. First supplementary, Dr. Bhim Singh ji. महोदय, हमने ये प्रश्न इसलिए लाया कि सरकार के संज्ञान में बात जाए कि CSR के तहत जो राशि खर्च की जा रही है वो बिहार में कम जा पा रही है। सरकार ने जो उत्तर दिया है उन्होंने बताया कि 21-22 में बिहार में 178 करोड़, 22-23 में 241 करोड़, 23-24 में 260 करोड़। मैं पॉइंट के बाद वाला डाटा छोड़ दे रहा हूँ। लेकिन महोदय, अगर इसी पीरियड में देखा जाए तो देश में जो राशि खर्च हुई है 21-22 में 27,141 करोड़, 22-23 में 30,932 करोड़ और 23-24 में 34,908 करोड़। अगर दोनों की तुलना करें तो परसेंटेज में हम देखें तो खर्च की गई राशि में से 21-22 में बिहार में 0.66%, 22-23 में 0.78% और 23-24 में 0.7% ही राशि खर्च की गई। महोदय, बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है, देश उसको आगे ले जाना चाहता है, हमारे प्रधानमंत्री जी आगे ले जाना चाहते हैं और माननीय वित्त मंत्री जी जो खुद सहृदय वित्त मंत्री हैं, पिछले बजट में पूर्वोदय का योजना लाया। अब ऐसी स्थिति में पूर्वोदय कैसे होगा? बिहार की आबादी देश की आबादी का 9% है, लेकिन ये जो कंपनियां हैं ये राशि बिहार में खर्च करने में 1 पॉइंट से नीचे है, 1% से नीचे है। तो हम सरकार से जानना चाहते हैं, माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं कि बिहार में खर्च की गई राशि का क्या कारण, कम क्यों खर्च किया जा रहा है, इसका कारण क्या है और इसमें बढ़ोतरी करने का क्या सरकार कोई उपाय करना चाहेगी? Honorable Minister. Sir, corporate social responsibility is a scheme, if I may say, under the Companies Act, no doubt. There's a separate schedule which also deals with it. But every decision of amount spent in any part of the country is a board-driven decision. A company and its board take a call on how much to spend, where to spend. So it is not a decision in which we can enter in and say, you have to spend here this much. So it is companies which are making profit, 2% of their profit they give as per law for social causes. So if Bihar, I would honestly wish that members of parliament also keep talking to different companies and impress upon them the need for getting money to be spent in Bihar. Second supplementary, Dr. Bhim Singh ji. महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि ये कंपनियों को ये निर्देश नहीं कर सकती कि कहां खर्च करें, कहां नहीं खर्च करें और कानून में ऐसा प्रावधान भी नहीं है। लेकिन जो सत्य और जो तथ्य सामने आए हैं उसमें आवश्यकता इस बात की महसूस की जा रही है कि कंपनियों को कुछ दिशा निर्देश, गाइडलाइंस दिए जाएं कि वे क्षेत्रीय संतुलन का भी ख्याल रखें। नहीं तो एक तरह से जो इतनी बड़ी राशि खर्च की जा रही है इससे क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ेगा। हम कहना चाहते हैं महोदय कि जो बिहार में कम राशि जा रही है इसका कारण क्या है? सरकार के उत्तर में ही जो दिया गया है डाटा उससे स्पष्ट होता है कि 21-22 में बिहार में कुल 232 कंपनियों ने खर्च किया और उन्होंने मिलकर 178 करोड़ खर्च किया। 22-23 में 297 कंपनियां गईं और खर्च 241 करोड़ किया। 23-24 में 325 कंपनियां गईं और 260 करोड़ खर्च किया। इसका आशय यह है कि जो कंपनियां खर्च कर रही बिहार में वो कंपनियां बिहार की ही हैं, ये छोटी कंपनियां हैं और मात्र 1 करोड़ से नीचे के ही कोई अनुदान वो दे पा रही हैं। तो हम सरकार से जानना चाहते हैं और अनुरोध भी करना चाहते हैं कि माननीय वित्त मंत्री जी, हृदय का उदार है उनका, वे बिहार पर कृपा करें और कुछ ऐसा इंतजाम करें कि बिहार में CSR के तहत राशि का खर्च में वृद्धि हो सके। क्या वो ऐसा करना चाहेंगी? Honorable Minister. Sir, this is something in which we'll have to enter into a board's decision and to tell them. At best, we can only request, sir, and that is not really
lawfully tenable. If the companies and their boards want to do it, they can still do it. And at best, we can only request them to take a couple of, socially important projects there. Can you only make be some changes in the norms? Like you are requesting the public sector banking, they should give this much loan to the MSME. Like that, can you give some norms can be changed so that the underdeveloped states will get benefit of the CSR? Sir, please. As a chairman, you have said it. I can take it as a suggestion and see what best I can do. Third supplementary, Sriman Ravichandra Vadi Raju ji. Thank you, sir. Sir, despite CSR mandates, many companies are underspending. Does government propose stricter penalties or enforcement mechanism for non-compliance? And whether government is considering a framework to channel CSR funds more effectively towards backward districts, including aspirational districts in Telangana? Thank you. Honourable Minister. So we do have a way in which we ask the companies to account for amounts spent, and that happens with a time lag. We also have a system by which we say if you have unspent amounts on which there are no proposals pending, if it is crossing a certain number of months, you will have to account for it, or immediately you will have to put it within 6 months into a publicly declared fund. And that is listed, a number of funds are listed into which they have to. Similarly, in projects which are ongoing, and if they are incomplete even after a certain number of years, that is 3 years, they are expected within 6 months again to put the money into public funds which can be used for many other common good. So, as I said, sir, it is companies which have to take the call. At best, we can only nudge them towards projects in some difficult or backward regions. More importantly, sir, the kind of listed categories, 12 of them, are pertaining to such issues and such problems which are largely from regions which are in difficult terrain, like some parts of Telangana, Bihar, some parts of Bundelkhand, and so on. So water, improving irrigation, or improving schools, improving health and sanitation, and so on. So the nature of the scheme itself will have to make them go to areas which are difficult in difficult situations or are facing challenges. Fourth supplementary, Sriman Sanjay Singh ji. धन्यवाद मान्यवर। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सीएसआर हर कंपनी को अपने मुनाफे का 2% खर्च करना होता है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं कि वो अपने ही एनजीओ बना के और उसमें पैसे दे के पैसे का हेर फेर करती हैं। तो क्या उसको मॉनिटर करने के लिए कोई व्यवस्था सरकार के पास है? और दूसरा एक अच्छा सुझाव आया कि जो रिमोट एरियाज हैं जहां ज़रूरत है उन जगहों पे अगर सीएसआर फंड का इस्तेमाल हो तो ज़्यादा वो उपयोगी होगा मान्यवर। तो क्या उसके लिए कोई सरकार की ओर से निर्देश जारी हो सकता है? धन्यवाद। Sir, forming a fund and through that fund or a trust, spending CSR money is not wrong, it's not illegal. Yes, trusts can be set up, monies can be given, but accounting for that as to how that has helped the cause under the 12 listed items are monitored. And therefore, those accounts, when they come to the government, we certainly have the people look into to see if it is being spent rightly or if it is being diverted to that extent, but it depends on their own disclosed accounts. So there is, of course, in the Companies Act, in section 135, a clear line which says company shall give preference to local area and areas around it where it operates. Even I presume that would answer our honorable member from Bihar as well. So companies can very clearly choose the areas which are in difficult situation and move towards assisting that area. But as regards monies going through their own trusts also,
disclosures are required, and it is the disclosure which will make us then act on them, saying you should have sent the money here, you should have put it in the public fund, and so on. So specifically, there are ways in which it is accounted for, and they are expected to follow that guidelines. I'll just highlight, sir. Unspent amounts, sir, pertaining to ongoing projects. Action which is required is they are expected to transfer such unspent amount to a separate bank account of the company and that separate bank account will be called unspent CSR account. They have to put it into that. And that has to happen within 30 days from the end of the financial year. So within that year, they have to, within 30 days, show through opening an account called unspent CSR amount. Another, the company shall spend the same amount in pursuance of the CSR policy within the next 3 financial years. So this year you have some unspent amount. Within the financial year, you open an account in the bank in which you have your account, call it unspent CSR account, and spend it within the next 3 financial years. After a lapse of the 3 financial years, sir, that amount will be transferred to any fund which is mentioned in Schedule 7 of the Companies Act. So within a period of 30 days itself, they have to move it to an account which is specifically for it and spend it. Another category is unspent amounts pertaining to other than ongoing projects. As I said earlier, sir, if it's an ongoing project, you have amount unspent, you put it into an account within 30 days of that financial year, and then 3 years you show spending. But if it is remaining without any projects, then that that amount has to be transferred, as I said, to a fund which is mentioned in Schedule 7 of the Act. So even in that year, if you have not had a project for that, it is totally remaining with you, that amount should go away into this. And within 6 months from the end of that financial year, this should happen, that it should go to a public fund which is in Schedule 7 of the Act. So there's no way in which a company can sit without accounting for that money which is within the 2%. And I would just draw the attention of the honorable member through you, sir, that the maximum penalty for non-compliance of CSR is non-disclosure is one of the non-compliance aspects. For non-disclosure, 3 lakhs for the company and 0.50 lakh for each defaulting officer. That's provided for, and we will impose that. For non-transfer of unspent amount, 1 crore or twice the unspent amount for the company will be levied that as a penalty. Whichever is less, then 2 lakh or 1/10 of the unspent amount for the officer, whichever is less. So both the company and the officer who manages it are taken to task when amounts are not transferred or disclosure not happening. Now, 5th supplementary, Sriman Raiga Krishnaya ji. Respected Chairman, I suggest to the government the shares or funds not properly utilizing many companies and other institutions. I suggest to the government there is several schools, hostels, residential schools, no own buildings, and even some schools not having washrooms and press rooms. In such cases, the CSR funds diverting in so many small purposes. Instead of that, the government of India has established a nodal agency and collect all the amounts from CSR funds and construct the buildings of hostels, schools and hospitals, and there is no some hospitals, ambulances also. In such cases, norms should be changed, and the CSR funds should be utilized for the purchase of the ambulances. So I request the government, CSR funds के ऑडिट करना जरूरी है, वो मिसयूज हो रहा है,
उसके बारे में गवर्नमेंट एक बात सोच रहा है। Honorable Minister. I think largely I've answered that concern through various answers for different questions. But I would request the honourable member also to approach, particularly if he is coming from Andhra Pradesh, there are several large companies within that state. They can approach them and ask them if they would consider proposals from their schools or hospitals for their consideration. Now, question number 260, Ms. Swati Maliwal ji. Question number 260, sir. Honourable Minister. It is laid on the table of the House. Now, first supplementary, Ms. Swati Maliwal ji. सर, आज देश में बड़े बड़े फूड चेन्स डोमिनोज, पिज्जा हट, KFC, हल्दीराम एक्सेट्रा कानून का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं और अपने मेन्यू पे खाने की कैलोरीफिक वैल्यू नहीं लिख रहे हैं। सर, एक पिज्जा में अमूमन 1500 से 2000 कैलोरीज होती हैं, यानी 15 से 20 रोटी के बराबर कैलोरीज, विच इज एक्सट्रीमली अनहेल्दी। सर, अगर लोगों को ये बात खाना ऑर्डर करने से पहले पता चल जाए तो वो खुद भी कम जंक फूड खाएंगे और बच्चों को भी कम देंगे। सर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इन रेस्टोरेंट चेन्स के खिलाफ क्या कार्यवाही होगी कि वो मेन्यू पे कैलोरीज डिस्प्ले करना शुरू करें। जो रेस्टोरेंट्स कैलोरीज लिख भी रहे हैं उनको कैसे चेक किया जा रहा है कि वो सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या नहीं। Honourable Minister. माननीय अध्यक्ष जी, सभापति जी, जो इनका प्रश्न है वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा हम गवर्न करते हैं और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा हम इस बात की चिंता करते हैं कि जो भी एक ऑब्जर्वेशन फूड है, जो भी आर्टिकल है, आइटम है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन वो साइंस बेस्ड हो, ये पहला उसका मैंडेट है। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये कहाँ पर बनता है, उसके स्टैंडर्ड्स क्या है और उसके प्रेमिसेस में उसके बारे में भी हम स्टैंडर्ड्स तय करते हैं। उसी तरीके से उसका स्टोरेज सिस्टम क्या है और उसके प्रोसीजर और टेम्परेचर मेंटेन होता है कि नहीं होता है, इसके भी हम स्टैंडर्ड्स तय करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, उस ट्रांसपोर्टेशन के स्टैंडर्ड्स को भी हम तय करते हैं और उसमें टेम्परेचर और ट्रेसेबिलिटी, इसका भी हम ध्यान रखते हैं। पॉइंट ऑफ सेल, वहाँ पर उसके स्टैंडर्ड्स क्या हो, इसकी चिंता करते हैं। और जो इम्पोर्ट्स होते हैं आर्टिकल्स, उसके बारे में पूरी चिंता FSSAI करती है। जहाँ तक FSSAI का मैंडेट है, जो आपने प्रश्न पूछा है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि हम इंश्योर करते हैं अवेलेबिलिटी, सेफ एंड होलसम फूड, और FSSAI यूनिफॉर्मली इसको एप्लीकेबल करती है अक्रॉस द कंट्री। अकॉर्डिंग टू द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशंस ऑफ 2020, इसमें मैंडेटरी है इंफॉर्मेशन को कि हम प्रेमिसेस में जहाँ फूड बना है उसके प्रोसेस्ड, सर्व्ड और स्टोर्ड उसको हम डिस्प्ले करें। उसी तरीके से स्पेसिफिक प्रोविजंस में रेस्टोरेंट्स एंड फूड बेस्ड सर्विस के एस्टैब्लिशमेंट्स में वहाँ भी हम इस बात की चिंता करते हैं। जो रेगुलेशन 9(1) है और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, उसमें रेगुलेशन 2020 के तहत फूड एस्टैब्लिशमेंट्स में जो सेंट्रल लाइसेंसिंग है वो भारत सरकार करती है, और साथ में जो फूड चेन है जिसके 10 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं उनको भी हम रेगुलेट करते हैं। बाकी को जो है वो स्टेट्स रेगुलेट करती है। इसी तरीके से जो ई-कॉमर्स है उसमें भी कैलोरीफिक वैल्यू जो है या एलर्जन है कि नहीं है, मल्टी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन थ्रू मेनू कार्ड्स, बोर्ड्स, बुकलेट्स, हैंडआउट्स, वेबसाइट्स, इनके द्वारा डिस्प्ले करने की आवश्यकता है। जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, इन सभी चीज़ों को हम रेगुलेट करते हैं, और इन सभी चीज़ों में जो लेस देन 10 आउटलेट्स है उसको तो स्टेट रेगुलेट करता है और वहाँ के लोकल लोग रेगुलेट करते हैं, लेकिन बाकी सबको हम रेगुलेट करते हैं। और इसके साथ ICMR के हमने स्टैंडर्ड्स भी बना रखे हैं कि पर 2000 पर डे के हर से ज़्यादा हम कैलोरिक वैल्यू नहीं देंगे। अब जहाँ तक इनका प्रश्न है, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सेंट्रल लाइसेंसिंग की दृष्टि से आते हैं, जो कंपनीज आती हैं,
उनको हम पूरी तरह से रेगुलेट करते हैं और उसके लिए हम एक्शन टेकन भी करते हैं। आपको मैंने इसमें बताया भी है कि 2024-25 में 165 एस्टैब्लिशमेंट्स की इंस्पेक्शन हुई, जिसमें से 164 कंप्लायंट थे, एक नॉन कंप्लायंट था और उनको नोटिस दिया गया और किसी के खिलाफ कोई लाइसेंस सस्पेंड नहीं किया गया है। तो हमारे रेगुलर वॉच है इस पर माननीय सभापति जी, और हम कोशिश करते हैं कि वो कैलोरीफिक वैल्यू भी अपनी डिस्प्ले करें और वो कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो ICMR तय करता है। Honorable members, the speeches of the members in the discussion on the working of the Ministry of Rural Development raised by Dr. K. Lashmanji on the 10th March 2026 was completed on 12th March 2026. The reply by the Honorable Minister to the discussion is pending. In view of the request received from the Honorable Minister, if the House agrees, he may reply to the discussion from 2 p.m. onwards today. The further discussion on the Appropriation Bill 2026 may resume after the reply. The House agrees? Yes. The House stands adjourned now to meet at 2 p.m. Thank you.